now we have to section 105. In 105 meeting was discontinued. Yes, okay. So you read. Are you comfortable? ना ये तीसरा मीटिंग है तो ऐसा कोई नहीं वैसा कुछ. Yes. Repayment plan. The debtor shall prepare in consultation with the resolution professional a repayment plan containing a proposal to the creditors for restructuring of his debts or affairs. B. 2. Repayment plan may authorize or require the resolution professional to carry on the debtor's business or trade on his behalf or in his name, or realize the asset of the debtor, or C. Administer or dispose of any funds of the debtor. 3. The repayment plan shall include the following, namely, justification for preparation of such repayment plan and reasons on the basis of which the creditors may agree upon the plan. B. Provision for payment of fee of the resolution professional. C. Such other matters as may be specified. 106. Just report. Yeah. Report of resolution professional on repayment plan. 1. The resolution professional shall submit the repayment plan under section 105 along with his report on such plan to the adjudicating authority within a period of 21 days from the last day of submission of claims under section 102. The report referred in subsection 1 shall include that A. The repayment plan is in compliance with the provision of any law for the time being in force. B. The repayment plan has a reasonable prospect of being approved and implemented. And C. There is a necessary summoning a meeting of the creditors if required to consider the repayment plan, provided that where the resolution professional recommends that a meeting of the creditors is not required to be summoned, reasons for the same shall be provided. 3. The report referred to in subsection 2 shall also specify the date on which and the time and place at which the meeting should be held if he is of the opinion that a meeting of the creditors should be summoned. Yeah. So the next. 4. For the purpose of subsection 3, A, the date on which meeting is to be held shall not less than 14 days and not more than 28 days from the date of submission of report under subsection 1. B, the resolution professional shall consider the convenience of creditors in fixing the date and venue of the meeting of the creditors. 107. Summoning of meeting of creditors. The resolution professional shall issue a notice claiming the meeting of the creditors
at least 14 days before the date of fixing of such meeting. To the resolution person shall send the notice of the meeting to the list of creditors prepared under section 104. The notice sent under subsection 1 shall state the address of the adjudicating authority to which the repayment plan and report of the resolution professional on the repayment plan has been submitted and shall be accompanied by a copy of repayment plan, B, a copy of statement of affairs of the debtor, C, a copy of said report of the resolution professional, and D, forms for proxy voting. For the proxy voting include electronic proxy voting shall take place in such manner and form as may be specified. Okay, so can we conclude that to previous section? Okay. Uh, So after concluding that section, we go forward to the next section. Okay. So from where? From repayment plan. Okay. So the debtor shall prepare in consultation with the resolution professional. The debtor shall prepare in consultation. I think we have discussed. I have discussed that section. No? Yeah. Report of resolution professional on repayment plan. On a repayment plan. The resolution professional shall submit repayment plan under section 105 with his report. Okay, the resolution professional shall submit repayment plan under section 105. repayment plan के बारे में report देना है ना, report देना है. So, such plan to the adjudicating authority with the period of 21 days from the last date of submission of claim. Last date of submission of claim कितना था? T0 plus 21 है ना? Plus 21. Now it is the day T21 plus 21 is T42. Okay. So the report referred to in section 1 shall include that. Repayment plan include होगा. The report referred to in subsection 1 shall include that. Repayment plan is in compliance with the provision of any law for the time being in force. Okay. Compliance man. That is our declaration. Here file our declaration. Repayment plan has a reasonable prospect of being approved and implemented and prospected. That is a feasible. Repayment plan is a feasible plan, not an artificial plan, not a possible plan. There is a necessity for summoning meeting of the creditor if required to the creditor the repayment plan. ठीक है? तो इसमें जो जरूरत है कि क्रेडिटर का मीटिंग हम बुलाएं, कॉल करें, right? Consider the repayment plan. That is natural. Okay, that is natural. अभी यहाँ क्या हो रहा है? Provided that where resolution recommend that meeting of creditor is not required to be summoned. Okay, not reason for the same to be provided. तो जहाँ resolution की बात थी वो मीटिंग को बुलाया, क्रेडिटर को बुलाया जाना था. That was in the
सर्कमस्टांस होता है कि एजुकेशन प्रोफेशनल का कहना है कि क्रेडिटर को कॉल करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, राइट ना? हाँ। ये क्या, ऐसा क्यों हो रहा है? तो अगर ऐसी अगर कुछ कभी हुआ होगा, कभी कुछ ऐसा हम्म हुआ होगा, डला है ना, या ऐसा हाँ हाँ आ सकता है कि भाई ठीक है, हाँ हाँ बुलाने की जरूरत नहीं है, इसे बाहर या he हाँ could cannot understand, हाँ, हम्म तो हम्म ऐसे तो रीजन देगा। हम्म अभी द रिपोर्ट में रिपेमेंट प्लान का रिपोर्ट दे रहा है ना? हाँ 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 अभी अभी द रिपोर्ट रेफर टू सबसेक्शन 2। हम्म सबसेक्शन 2 में जो रिपोर्ट है, shall also specify the date on which the time is at which the meeting should be held if he is of opinion that meeting of director should be summoned. सो थर्ड में क्या करता है, टाइम एंड डेट डालना पड़ेगा। हम्म, हाँ हाँ कहाँ कौन सा प्लेस है, कहाँ बुलाना है, हम्म, ये भी बात हाँ कर। हाँ 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 फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 3 द डेट ऑन हाँ विच is to be held is not less than 14 days and more than 21 days from the date of submission of report. तो 14 दिन के पहले मीटिंग नहीं बुला सकते हैं, हाँ हाँ ठीक है ना? तो हम्म टी प्लस 21 प्लस 21 हो गया, हाँ प्लस 14 होना जरूरी है ना? हाँ 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 लेकिन प्लस 14 और 14 14 टू हम्म, 21 होना जरूरी है, ठीक है ना? हाँ हाँ इसके बीच the resolution professional shall consider the convenience of creator in fixing the date and venue of the meeting of the creator. Uh, the resolution professional have to take care of the convenience of the creator. यहाँ ऐसा डाला गया है ना? हाँ कभी भी अपने हम्म हिसाब से दे दिया, that is not reasonable, that is not practical. हाँ So हम्म 107 summoning of meeting of creditors. हाँ The resolution professional shall issue a notice calling the meeting of creditor at least 14 days before the at least 14 days before the date fixed the mode. अच्छा, बात ये हुआ था, बात ये हुई थी कि 14 डेज का जो हमने ऊपर में देखा कि कम से कम हाँ हाँ का होना चाहिए। हाँ कारण ये है कि प्रोविजन में ऐसा डला हुआ है कि 14 डेज नोटिस चाहिए, ठीक है ना? हाँ 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 14 डे का नोटिस चाहिए तो 14 डे का नोटिस चाहिए तो 14 डे से पहले तो हो ही नहीं सकता है ना? हाँ हाँ इसीलिए 14 हाँ डे इसका provision लिखा है। हम्म और resolution professional send the notice to the meeting to the list of creditor prepared under section 104. हाँ, notice sent. The notice sent under section shall state the address of adjudicating authority का एड्रेस डालेगा, हाँ रिपेमेंट प्लान एंड रिपोर्ट ऑफ resolution professional. रिपेमेंट प्लान, ठीक है, और हम्म report of the resolution professional on the repayment has been submitted and shall be accompanied by. हम्म तो जो नोटिस जो जाएगी ना सब क्रेडिटर को, हाँ बड़ी हाँ हाँ हल्की होती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट, हम्म क्या रिपेमेंट प्लान है वो डाल दें, हाँ 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 कॉपी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर डाल दें, कॉपी ऑफ सिविल हम्म रिपोर्ट ऑफ द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल डाल देंगे। अच्छा, हाँ हाँ फॉर्म ऑफ प्रॉक्सी वोटिंग डाल देंगे, और साथ में ये भी डाल देंगे कि ये जो सारे डॉक्यूमेंट हमने इस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के फलाना ऑफिस में, कोलकाता के हाँ एनएस में एक ऑफिस है, वहाँ हमने ये हम्म सबमिट कर दी है ऑलरेडी, ये कॉपी हाँ हाँ है है ना? हाँ हाँ तो ऐसा हम्म proxy voting including electron shall take place in such manner and form as it is specified. मैनर एंड फॉर्म एज इट इज स्पेसिफाइड, हम लोग ये एक्ट
पढ़ने के बाद ना, एक्ट पढ़ने के बाद में उस रेगुलेशन को भी रेफर करें, है ना। कंडक्ट ऑफ द मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स, ठीक है। द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स शैल बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन 109, 1010 एंड 111, ठीक है। ये सेक्शन फॉलो करके, ये सेक्शन को फॉलो करके सेक्शन को आपने मीटिंग करना है। हाँ, इन मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स द क्रेडिटर्स से डिसाइड अप्रूव मॉडिफाई। अच्छा, मीटिंग का जो आउटकम हो सकता है, क्या हो सकता है, एज इट इज अप्रूव हो गया, थोड़ा मॉडिफाई हो गया, थोड़ा रिजेक्ट हो गया, राइट। चौथा तो कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता है इस हिंदुस्तान में। Resolution plan shall ensure that the modification of suggested by creditor, consent of debtor shall be obtained for each modification। बिल्कुल सही बात है। क्रेडिटर ने अपने हिसाब से अगर मॉडिफाई कर दिया और वो डेटर के पल्ले ही नहीं पड़ा, तो वो कंसेंट जो है, कंसेंट लेगा, उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, है ना, डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कंसेंट। Resolution professional shall may, for a sufficient cause, adjourn meeting of the creditor for a period not than 7 days at a time। मीटिंग adjourn भी होता रहेगा। इट इज नॉट पॉसिबल कि एक बार में ही क्रेडिटर आए, उनको सब समझ में आ गया, अच्छा लग गया, हाँ ऐसा आएंगे, सोचेंगे, डिस्कस करेंगे, बहस होगी, है ना। आगे क्रेडिटर का तो 7 डे का नॉट मोर, 7 डे से ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई हम अब 1 महीना के बाद में आएंगे और सोच के बताएं, भाई जो भी सोचे 7 दिन के अंदर में क्रेडिटर सोच लो, है ना। क्योंकि प्रोफेशनल का भी पैसा लग रहा है, प्रोफेशनल फी लग रही है, ठीक है। वोटिंग राइट इन मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स, voting rights meeting of creditors, a creditor shall be entitled to vote at every meeting of the creditors in respect of repayment plan in accordance with the voting share assigned to him। जितने वोटिंग शेयर है, ऐसा नहीं है कि एक आदमी वोट हो गया, ऐसा नहीं। किसी ने अगर 1 करोड़ में 50 लाख की उधारी दे रखी है, तो उसका 50 लाख का है, 50% का, तो 50% का वोटिंग का ही हो जाएगा, है ना। सो अकॉर्डिंग टू ये the resolution professional shall determine voting share to be assigned to each creditor in the manner as specified by the board। ठीक है, ये हम लोग करेंगे बात मैनर के बारे में बताया। A creditor shall not be entitled to vote in respect of debt of an unliquidated amount। This is a question mark from my side also। So this is still uncleared, getting clear। Discuss a creditor shall not be, yes, debt for an unliquidated amount। अनलिक्विडेड अमाउंट का मतलब क्या हो सकता है कि अनलिक्विडेड अमाउंट, डेट फॉर अनलिक्विडेड अमाउंट के लिए जो कोई फर्नीचर फिक्चर ये सब का तो नहीं हो सकता है। मैं भी वही गेस किया, मगर इसे क्लियर करना पड़ेगा। गेस वर्क के हिसाब से कुछ श्योर नहीं हो सकते, है ना, जब तक कुछ क्लियर कहीं से। या तो ये हो सकता है, किसी को अपने मटेरियल बेचे, उसका टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है कि भैया 45 दिन में अपने को पेमेंट करना है, और अभी 10 दिन हुआ, तब तक वो तो अनलिक्विडेटेड हो गया। I don't think this transaction can be considered as unliquidated amount। Still I am not sure। अंदाज से तो सोच रहे हैं, मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ कुछ, मगर सिक्योरिटी आने तक क्वेश्चन मार्क लगा रखा हूँ, राइट।
So creator shall हाँ हाँ agree to vote in the meeting. जो क्वेश्चन मार्क अगर लगा दिया अपने हिसाब से, अगर श्योर हो गया तो हाँ हाँ मुश्किल हो जाएगी. हम्म। The creator shall not be entitled to vote if he is not creator mentioned in the list under section 4. 10104. अच्छा, उस लिस्ट में नहीं है कोई बंदा, ठीक है, हम्म लिस्ट बना है, हम्म। वो क्रेडिटर है लेकिन वो लिस्ट में. नाम नहीं है। हाँ, मान लो कि, या फिर ऐसा भी इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि लिस्ट में है उसका नाम, लेकिन 1 लाख, हाँ लेकिन उनका कहना है क्रेडिटर का मैं 5 लाख का दिया क्रेडिटर, ठीक है, हम्म। तो उसे 1 लाख हाँ के हाँ बराबर की वोटिंग राइट मिल सकती है. हाँ, हम्म ये हो सकता है, एक ये कंडीशन है. ही इज एन एसोसिएटेड ऑफ डेटर. एसोसिएटेड पर्सन, हम्म। रिलेटेड पार्टी जो होते हैं ना, रिलेटेड हाँ पार्टी हाँ हाँ तो उनको वोटिंग राइट नहीं मिल सकती है, हम्म। घर के आदमी है बोलकर. हाँ ओके, बिकॉज he may be a biased person. हम्म। Yeah. You will read or I? You read. हाँ Yeah. 110 rights of secured creditors in respect to repayment plan. 1. Secured creditors shall be entitled to participate and vote in the meeting of the creditors. 2. A secured creditor participating in the meetings of the creditors and voting in relation to the repayment plan shall forfeit his rights to enforce the secu- security during the period of the repayment plan in accordance with the terms of the repayment plan. 3. Where, where a secured creditor does not forfeit his right to enforce a security, he shall submit an affidavit to an resolution to the resolution professional at the meeting of the creditors stating a that the right of vote exercised by the secured creditor is not only in respect of the unsecured part of the debt, and b the estimated value of the unsecured part of the debt. 4. In case a secured creditor participates in the voting on the repayment plan by submitting an affidavit under subsection 3, the secured and unsecured parts of the debt shall be treated as separate debt. 5. 5. The concurrence of the secured creditor shall be obtained if he does not participate in the voting on repayment plan, but provision of the repayment plan affects his right to enforce security. Explanation. For the purpose of this section, period of the repayment plan means the period from the date of the order passed under section 114 till the date on which the notice is given by the resolution professional under section 117 or report submitted by the resolution professional under section 118 as the case may be. 111 approval of repayment plan by creditors. The repayment plan of any modification to the repayment plan shall be approved by a majority of more than three-fourths of the value of the creditors present in person or by proxy and voting on the resolution in a meeting of the creditors approve the repayment plan by creditors. 112 report of meeting of creditors.
on repayment plan. 1. The resolution professional shall prepare a report of the meeting of the creditors on repayment plan. 2. The report under subsection 1 shall contain A. Where the repayment plan was approved or rejected, and if approved, the list of modification, if any. B. The resolution which were proposed at the meeting and the decision on such resolution. C. List of the creditors who were present or represented at the meeting and voting records of each creditor for all meetings of the creditors, and D. Such other information as the resolution professional thinks appropriate to make known to the adjudicating authority. 113. Notice of decisions taken at meeting of creditors. The resolution professional shall provide a copy of the report of the meeting of creditors prepared under section 99. A. The debtor. B. The creditors, including those who were not present at the meeting. And C. The adjudicating authority. 214. Order of adjudicating authority on repayment plan. The adjudicating authority shall by an order approve or reject the now you take a rest. I am continuing. So you listen. I am ready. Okay. So order of adjudicating authority on repayment plan. Okay. Order of adjudicating authority on repayment plan. Adjudicating authority shall by and approve or reject the repayment plan on the basis of report of the meeting of the creditor submitted by the resolution professional. So अभी यहाँ है कि क्रेडिटर ने अप्रूव या रिजेक्ट या मॉडिफाई किया था, है ना? अभी यहाँ एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी has a power to approve or reject payment plan. ठीक है ना? Provided that where meeting of creditor is not summoned, authority shall pass the order on the basis of report. अच्छा, अभी यहाँ एक सवाल उठता है, बिना क्रेडिटर के मीटिंग को बुलाए हुए एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी ऑर्डर कैसे पास कर सकता है? ये समझ में नहीं आया, ठीक है ना? ये पल्ला नहीं पड़ा। बिना बुलाए किसी को रेजोल्यूशन कैसे पास कर देगा ऑथोरिटी? The order of adjudicating authority approving repayment plan for direction of implementation of, ठीक है? उसे इम्प्लीमेंट कराने के लिए डायरेक्शन देता है ना? डायरेक्शन देता है, ऐसा किया है ना? Where the adjudicating authority the person that repayment plan required modification, it may direct the resolution plan to reconvene meeting of the creditor or considering a repayment plan. The adjudicating opinion that the repayment plan require modification, it may direct the resolution to reconvene the meeting. अच्छा, adjudicating authority को भी लग सकता है गलत है, समथिंग इज रॉन्ग, तो वो रिकन्वेन मीटिंग करने के लिए देगा, फिर से ये होगा effect of order of adjudicating authority on repayment plan where he had approved the repayment plan that as is proposed by the
binding on the creditor mentioned in repayment plan and preparation. Creditor को bind where or authority reject the repayment plan under section 114. The creditor shall be entitled to file application. Debtor and creditor shall be entitled to file application. अभी तक बैंकरप्सी फाइल करने की एप्लीकेशन नहीं, ठीक है ना। अभी जो प्लान ही नहीं, रिजोल्यूशन प्लान मतलब सेटल करने का प्लान, सेटल नहीं मामला। तो क्या होगा, अब बैंकरप्सी फाइल होगी, बैंकरप्सी में क्या होगा, बैंकरप्सी में और कोई सेटलमेंट नहीं होता है। होता है कि नहीं होता है, ये हम जब सेक्शन पढ़ेंगे तब देखेंगे, है ना। बैंकरप्सी में तो जो जिसका है, अब जो भी है जिसकी लायबिलिटी है वो उसको शेयरिंग किया जाएगा, और क्या है। A copy of the order passed by the executing authority under section subsection 2 shall be provided to the board. बोर्ड को भी दिया जाए, बोर्ड को, बोर्ड जो कि IBBI है ना, बोर्ड NCLT is the adjudicating authority and board is IBBI, क्योंकि सब ये भी जो रेगुलेशन बनाया गया है ये बोर्ड ने बनाया है ना। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उस रेगुलेशन को फॉलो करके काम कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग द एंट्री इन द रजिस्टर रेफर्ड टू सेक्शन 96, implementation and supervision of repayment plan. ठीक है, now you will. One, the resolution professional appointed under section 97 or under section 98 shall supervise and supervise the implementation of the repayment plan. Two, the resolution professional may apply to the educating authority for directions if necessary in relation to any particular matter arising under the repayment plan. Three, just इस सेक्शन को कंक्लूड करते हैं, सब सेक्शन को। मानो कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने इम्प्लीमेंटेशन को, प्लान के इम्प्लीमेंटेशन के लिए डायरेक्शन दे दिया, ठीक है ना, एक जगह डायरेक्शन दे दिया। now the supervisor of that implementation plan is the insolvency professional, yeah, and in between there may be some hindrances, कुछ बाधाएं आ सकती हैं कि भाई ये क्रेडिटर नहीं मान रहा है, ये कोई घर खाली नहीं कर रहा है, कोई घर खाली कराना है, ठीक है ना। कोई घर तो भाड़ा में हो सकता है ना। फर्दर बीच बीच में रिपोर्ट सबमिट करता रहेगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, और बीच बीच में डायरेक्शन देती रहेगी। डायरेक्शन दे दिया पुलिस को डायरेक्शन दे दिया कि पुलिस चाहिए जाकर के घर खाली करवा, है ना। डायरेक्शन resolution on the basis of application under subsection A. डायरेक्शन जो है वो में प्रोफेशनल ने डायरेक्शन के लिए अप्लाई किया था कि भाई देखिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तीन में एडजुडिकेशन ने डायरेक्शन इश्यू कर दिया। ठीक है, नाउ yes you read. Completion of repayment plan. One, the resolution professional shall within 14 days of the completion of the repayment plan forward to the person who are bounded by the repayment plan under section 115 and the adjudicating authority following documents named adjudicating authority. Yeah. The following documents, namely A, the notice that the repayment plan has been fully implemented, and B, the copy of a report by the resolution professional summarizing all receipts and payment made in pursuance of the repayment plan and extent of the
implementation of such plan as compared with the repayment plan approved by the meeting of the creditors. 2. The resolution professional may apply to the adjudicating authority to extend the time mentioned in subsection 1 for such further period not exceeding 7 days. 118. Repayment plan coming जस्ट to an जस्ट अ मिनट 117 को अपने समराइज कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोफेशनल ने विद इन 14 डे ऑफ कंप्लीशन रिपेमेंट प्लान जो है ना कि रिपेमेंट प्लान का कंप्लीशन हो गया, ठीक है ना, हाँ कंप्लीट कुछ completion of repayment plan provided to the person who are bound to the repayment plan under section in forward notice of repayment plan fully implemented। सब कुछ हो जाने के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद में 14 डेज के अंदर, ठीक है ना, 14 डेज के अंदर में नोटिस दे देगा कि भाई सर इम्प्लीमेंट हो गया, जो आपने कहा था वो इम्प्लीमेंट हो गया, है ना, हाँ पेमेंट लगा देगा, ठीक है ना। The resolution professional may apply the resolution to the extent time mentioned not further not exceeding। कुछ कारण हो सकता है मैं 14 डेज में नहीं फाइल कर पाया और नहीं बन पाया, ठीक है ना, तो 7 दिन का समय और ले सकता है, उससे ज्यादा समय नहीं लेगा। मतलब कि एक्स्ट्रा टाइम भी 7 दिन का दे दिया, फिक्स्ड कर दिया है, उससे और ज्यादा का कोई स्कोप नहीं बचा है ना, ठीक है। दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ओके, या you read it। repayment plan coming to and prematurely. 1. A repayment plan shall be deemed to have come to an end prematurely if it has not been fully implemented in respect of all the person bounded by it within the period as mentioned in the repayment plan. 2. Where a repayment plan comes to an end prematurely under this section, the resolution professional shall submit a report to the adjudicating authority, which shall state A. The receipt and payment made in presence of the repayment plan, B. The reason for premature end of the repayment plan, and C. The detail of creditors whose claims have not been fully satisfied. 3. The adjudicating authority shall pass an order on the basis of the report submitted under subsection 2 by the resolution professional that repayment plan has not been completely implemented. 4. The debtor or the creditor whose claim under repayment plan have not been fully satisfied shall be entitled to apply for bankruptcy under bankruptcy order under chapter 4. बैंक्रप्सी ऑर्डर पास हो जाएगा 118। 5. The adjudicating authority shall forward to the persons bound by the